गुड आफ्टरनून, आई वेलकम यू टू अनअकैडमी। एंड आज आपका टर्म 1 का कंप्यूटर एप्लीकेशंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ होगा लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि कैसे क्वेश्चंस थे, हाउ वाज द डिफिकल्टी लेवल, लेट्स फाइंड आउट इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। अगर आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है, जितने भी लोग प्रेजेंट है प्लीज एक बार थम्स अप डाल दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई नो दैट आई एम लाइव। एंड जितने भी लोग प्रेजेंट है ऑल्सो जस्ट प्रेस द लाइक बटन फॉर वंस। We will quickly start discussing today's question paper, and by the looks of it, I think most of you are quite happy with the paper, क्योंकि paper was not that difficult, but people who find कि ये question थोड़ा difficult था, ये वाला question paper, we will have a discussion on that as well कि आप term 2 के लिए कैसे prepare कर सकते हो। Alright, so if I'm live, please put a thumbs up अगर मेरी voice audible आ रही है सबको, if you're able to see the screen, because हम लोग question paper देखेंगे and we'll try to solve those. So I can see most of you guys are aiming for 25 on 25. That's pretty awesome. If you think about it, paper was very easy. All right. So please put the like button for once, and इसके बाद हम लोग quickly start करते हैं. All right. Just a quick introduction. My name is Aakash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay, and I've been teaching computer science on Unacademy for quite a while now. And if you need sessions for term 2, please do not forget to follow me on Unacademy, and also do not forget to follow this channel अगर आप देख रहे हो इस टाइम पे। All right, so without any delay we'll be quickly starting. I know everyone is excited to know their marks, so without any delay हम लोग start करते हैं। This is what we're going to do in this session. हम लोग थोड़ा analysis करेंगे, कैसे question थे, how could you have solved those, answering की हम लोग discuss करेंगे। And for the people who think कि उनका exam अच्छे से नहीं गया है, उन लोगों के लिए हम लोग थोड़े स्टेप्स देखेंगे व्हाट यू कैन डू फॉर टर्म 2, बिकॉज टर्म 1 वाज जस्ट अ स्मॉल स्टेप, टर्म 2 इज अ बिगर स्टेप फॉर यू गाइस। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन ए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन सोर्स, हम लोग को पता है इट इज ओपन सोर्स व्हिच मींस इट्स modifiable and it can be shared with people and it can be available for free. All right, so all of the above would be the right answer for this. Identify the invalid HTML tag from the following list. We all know H1 to H6 जाता है, यहाँ पर H7 का कुछ काम नहीं है, ठीक है। So please mark your answers, अपने question paper में mark करते रहो side by side, so that in the end I'll ask you कि आपके कितने marks आ रहे हैं। Okay, so question number 3, dash are the rights given to persons over the creations of their minds. Now I know creativity से बनता है, तो creativity rights नहीं है, वो intellectual property rights है। So the person who gave me this paper has already marked all the answers, but some of the answers might be wrong, I'm not sure, but हम लोग देखते हैं। Extensions of HTML file is without thinking, हम लोग को पता है HTML होता है। So looking at the next question, कितने लोगों के right आ रहे हैं इसमें? I just want to know कि कैसा गया आपका एग्जाम। वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन है 0.625, तो आपके जितने भी राइट आएंगे, आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपके x क्वेश्चंस राइट है तो आपको सिर्फ 0.625 x लिखना है, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ऑलराइट, सो लुकिंग एट द फिफ्थ क्वेश्चन, द डैश टैग इन HTML is used to define that portion of the document which will contain information. So in every question, as I have discussed in my previous sessions, I hope you attended the previous sessions जहां पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिविजन किया था। तो head tag would be the right answer here. ये सारी information store करता है। Identify the correct statement with reference to the p tag. ठीक है, it is used within the body tag. All right, p tag defines a paragraph, right? And browsers automatically add a single blank line before and after each p element. All right, so ये दोनों अगर right हो गए तो eventually you do not have to look at C option. So all of the above is right. So OL starts for, I think everyone should have gotten this question right. Please put a thumbs up. So Aditya, all right, so you attended all those sessions. I hope it was helpful. The dash tag defines the terms in the description list. Description list का term हम लोग को define करना है, तो DT होना चाहिए उसका आंसर। This is the answer for that. All right, quickly 25 on 25. Good to see. Name the activity of electronically bullying or selling of products on online services or over the internet. So Flipkart, Zomato, Swiggy, what are all those things? They are e-commerce. ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है उसका मतलब। We have discussed this in the cyber ethics session जब हम लोगों ने सब चीजें डिस्कस की हुई थी। All right, the title element
defines a title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorites, displays the title for the page in search engine results. Alright, so title element आपका हमेशा title store करता है and it is inside your head tag. Head tag आपके पेज के बारे में सारे information store करेगा. So this is right, this is also right, and आपके title का ही favorite में store होता है उसका नाम. So all of the above would be the right answer to this. Sophia got 25 on 25. Okay. Face, size, color are attributes of which tag? Okay, not text, not T, not F. If you see, अगर आपको question नहीं आता, you can just directly see कि ये tags है ही नहीं. The only tag present here is font tag. Okay. Question number 12. Okay, interesting kind of question. 3 आपको points दिए हुए थे. This kind of software is freely distributed to users on a trial basis. So now this is the important part, trial basis. There is time limitation, okay, and one has to pay for the software to use it after the time limit, right? So you can directly mark shareware क्योंकि as we discussed 7 days का trial होता है या फिर 30 days का trial होता है ना? So this was the 12th question. Looking at the next question, H in HR tag stands for. So HR tag से क्या होता है? एक horizontal rule draw होता है, horizontal line. So B would be the right answer to this. कितने लोगों के अभी तक सारे ही right है? Please put a thumbs up. और जितने लोगों के अभी तक सारे right है, please like the video so that I can understand from there कि कितने लोगों का right आ रहा है. HTML files can be created using any spreadsheet, ना, presentation software also ना, photo editor impossible. So text editor is the right answer. So this is the technique of like eliminating options. All right. Next up, select the e-commerce fraud from the following list. I hope everyone is able to see the question. ये question थोड़ा I mean not clear होगा आपके लिए, but the answers are payment fraud, identity theft और phishing. ये सब आपके आते हैं e-commerce fraud में. So all of the above would be the right answer to this. ठीक है? Term dash refers to the gap between those who have access to ICT and those who don't. Without thinking you could have marked digital divide क्योंकि यही चीज आपने पढ़ी हुई है, आपके सिलेबस में यही था digital divide, and it was kind of the easiest topics which you could have learned. Which of the following will come under intellectual property rights? So trademark, patent, copyright or all of the above. We studied like 4 intellectual property rights that day, है ना? तो ये तीनों ही उसमें हैं. So all of the above would be the right answer to this. Question number 18. A unique symbol or a word used to represent a business or its product is known as. So this is the important part. Unique symbol. Unique symbol for example आपका Nike हो गया, आपका McDonald's हो गया या फिर maybe Adidas जो भी होता है, right? ये सब trademarks हैं. So this is the right answer. Next up, the dash tag inserts a single line break. So single line break मतलब new line हम लोग करते हैं. BR tag would be the right answer to this. The dash attribute of body tag is used to specify the color of the linked text. तो specify आपको करना है linked text का color. तो it is not C link, it is not I color, it is not link color, it is link only. Alright. इसके अलावा भी आपको अगर याद होगा A link, V link था. Also please guys, I know the exam is over, but please do not forget all these things. आपको आगे जाके बहुत काम आएगा when you move on to 11th standard अगर आप computer science ले रहे हो. अगर 11th 12th में काम नहीं आया तो कॉलेज में तो ऑब्वियसली ही आने वाला है. Okay, so Unacademy free special class features. We'll move on to the section B after this, but most of you guys want to prepare for term 2. उन लोगों के लिए who are getting about 20 marks or maybe less than 20 marks and they want to improve upon this score. I'm not saying कि 20 marks is a bad score, it is a very good score, but if you want to improve upon this score later on in term 2, आप क्या कर सकते हो? You can join the free special classes. I will be conducting them and it is kind of like YouTube, but it is much better because there is no spamming. You can get to see the notes, you can use to download the notes. अब live poll session होते हैं and also poll leaderboard होता है if you want the certificates. Okay, and this is my profile on Unacademy. Right, I'll be taking computer science courses there, also information and technology and artificial intelligence. तो आप मुझे follow कर सकते हो. I'll be conducting the courses probably next week onwards. मैं कल से start नहीं करूँगा because I know कि आपको थोड़ा rest करना है, अभी आपके हिंदी के exams है. Alright, so please do not forget to use this code क्योंकि ये जो classes हैं only get unlocked using this code. It's a special code. Next up, section B. All right,
Manish has copied the information from the resources available on the internet for his article without acknowledging the original source. ठीक है, उसने क्या किया है? Copied the information. Now, without acknowledging, तो क्या हो सकता है? Phishing is not there. Phishing मतलब you're taking the information for a fraud, for some criminal activity. Spying is also the same. Identity theft भी नहीं हो सकता है. But plagiarism, which stands for cheating or maybe copying, ठीक है? This is the right answer. Full marks in computers. Good to see that. All right. Rajesh, an IT club volunteer of the school, needs to add a picture of green earth in the center of the web page. All right. Now, as I told you, there are only like 3-4 words which are the most important in each and every question. तो यहाँ पर क्या है? He needs to add a picture. ठीक है? Help him choose the correct HTML command. And now you could directly write IMG आप directly बोल सकते हो, but ये जो तीन है, they are not tags. These are like random options. Encryption is one of the most prominent technique used for fast data transmission, secure data transmission, far away data transmission or free data transmission. So B would be the right answer to this. All right, just a water break. कितने लोगों के अभी तक 23 on 23 राइट है? प्लीज पुश द लाइक बटन सो दैट आई नो. नेक्स्ट अप, मिस संध्या, वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर इन पब्लिक स्कूल, हैज शोन द फॉलोइंग लिस्ट. तो ये लिस्ट है आपके सामने. दिस लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, आई थिंक नॉट डिस्क्रिप्शन, नॉट ऑर्डर्ड, नॉट डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर बुलेट्स यूज हो रही हैं. इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑलराइट, 23 राइट आउट ऑफ 25 टिल नाउ. In reference to comments in HTML document, identify the correct statement. कि कौन से जो statements हैं correct हैं according to the HTML document. Comment line is ignored by the web browser. Yes, ऐसा होता है. So this is right. It is a good practice to add comments in your HTML code. Yes, so that everyone is able to see that. If you're able to see the screen properly, अगर आपको वीडियो अच्छे से आ रही है, please let me know. Right? Please put a thumbs up if you're able to see my voice. Not see my voice, see my face, see the screen and hear my voice properly. Okay? अब लैग तो नहीं है, it's all cool. All right, so comment line is ignored by the web browser. It is a good practice to add comments to your HTML code. Yes, this is also right, and it helps to understand the code and increases code readability. So all of the above would be the right answer to this. ठीक है. All right, too many thumbs ups. Good to see that. Next up, GIMP, Mozilla Firefox, GNU Linux, Python come under. Now this was kind of a tricky question. I think अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, this would be like kind of difficult, not very difficult, but यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हम लोग जब GNU हम लोगों ने देखा था, GNU का फुल फॉर्म क्या होता है? GNU's not Unix. जब हम लोग ये सब पढ़ रहे थे, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे ये सब चीजें? हम लोग OSS में पढ़ रहे थे. ठीक है, OSS में मतलब आप इस चीजों को एडिट कर सकते हो. मोजिला एडिट मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, मोजिला का सोर्स कोड अवेलेबल है, पाइथन का सोर्स कोड अवेलेबल है. दैट्स व्हाई पाइथन इज फ्री. द पीपल हु आर लाइक कोडिंग, दे नो दिस. सो FOSS would be the right answer. Next up, Sneha wants B as the first numbering in her HTML list instead of A. Identify the most suitable attribute to specify the same. Now, looking at that, हम लोग ordered list लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं type A, and उसके बाद अगर हम लोग को A से start नहीं करना है, हमको B से start करना है, we write it as start is equal to 2. All right. So this would be the right option to this. Next up, Sajal has started learning web page designing through HTML. Help him identifying the incorrect statement regarding head tag from the following. Okay, so हम लोग को क्या statement find out करना है? Incorrect statement. Now, inside the head tag is the second tag which we use. It is used to define the head portion of the document. अगर ये आपका web page है, तो यहाँ पर अगर आपकी tab आ रही है, for example, this is Chrome, right? क्रोम में आपने फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब खोला है अभी, youtube.com. तो ये जो सारी चीज़ें हैं बॉडी टैग वाली इसके अंदर आती हैं, और जो हेड टैग वाली आती हैं वो यहाँ पर आती हैं. तो यस, दिस इज राइट. एंड टाइटल टैग यूज होता है उसके अंदर, दिस इज राइट, एंड दिस इज ऑटोमेटिकली नॉट द राइट आंसर. सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस. नो अदर टैग कैन बी यूज्ड इनसाइड द हेड ब्लॉक्स इज रॉन्ग ऑप्शन. The process of converting the original representation of the information, plain text, into alternative form, cipher text,
अभी कुछ आप रीडेबल चीज को अनरीडेबल चीज बना रहे हो या फिर सीक्रेटिव चीज बना रहे हो, हम लोग उसको बोलेंगे एनक्रिप्शन टेक्निक होती है वो। एनक्रिप्शन का ऑपोजिट इज डिक्रिप्शन एंड फिशिंग इज नॉट देयर, प्लेजरिज्म इज आल्सो नॉट देयर। सो राइट नाउ अभी तक किसके सारे ही क्वेश्चंस राइट हो गए? प्लीज यूज द चैट बॉक्स and if you found the questions to be very easy till now, please put a thumbs up and please do not forget to like the video so that I understand कि आपका question paper कैसा गया। According to my sources, what I found out was 80% of the people found the questions to be very easy. The question paper was actually easy, not that difficult as such. ठीक है? Now Shambhavi is designing a HTML form to collect users responses. ठीक है? Suggest her a suitable form element to take entry of users place of birth. Okay, so place of birth में हम लोग क्या करते हैं? For example, that's a random date. If I'm writing 1st January 2002, तो हम लोग चेक बॉक्स तो नहीं यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, पासवर्ड फील्ड नॉट यूजेबल, रेडियो बटन भी नहीं कर सकते हैं, सो कॉम्बो बॉक्स वुड बी द राइट आंसर। बट दिस वाज द एलिमिनेशन टेक्निक। इफ यू जस्ट वांट टू सॉल्व इट डायरेक्टली, आपके पास 3 कॉम्बो बॉक्स आएंगे जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो डेट, मंथ एंड द ईयर। All right, very easy question paper. I am okay. Interesting type of question. 3 bullets दिए हैं, a square box. ठीक है, square box है. Ticked when selected. By using just these two हम लोग को already पता चल जाएगा. It is a text box. Radio button is circle. Text box is like this. Combo box is like this. ठीक है, इसके नीचे drop down menu आता है. And check box is like this. ठीक है, तो 31st तक हम लोग कर लिया। All right, just a moment. Let me just make a correction. यहाँ पर it's the place of birth. So just a quick correction. All right. Looking at the right answer now, people got confused or maybe surprised कि ये क्या हो गया suddenly. But anyways, users place of birth अगर आप use करोगे तो आप क्या use कर सकते हो? Radio button, checkbox या password field. All right. दिस इज काइंड ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन क्योंकि चेक बॉक्स आप यूज नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, पासवर्ड फील्ड भी नहीं कर सकते हो, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स इज द ओनली एप्ट ऑप्शन इवन इफ इट्स द प्लेस ऑफ बर्थ और द डेट ऑफ बर्थ, हम लोग सिर्फ वही चीज यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, so this is done, 31 कर लिया हम लोगों ने। सेक्शन बी, Razia, a class 10 student, is a beginner in the field of web designing. Help her in identifying the attribute which is not related to body tag. All right, तो बैकग्राउंड से आप अपनी बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हो, बीजी कलर से कलर चेंज करते हो बैकग्राउंड का, टेक्स्ट से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो। सो दीज आर ऑल related to the body tag except SRC which is from the IMG tag. All right, looking at the next question, FOSS is a more user friendly as compared to proprietary software. Now this statement is wrong statement. Proprietary software जो paid software होता है वो ज़्यादा friendly होते हैं users को। Statement 2, proprietary software allows developers across the globe to participate in the ongoing development of the software. Proprietary नहीं, वो OSS softwares होते हैं, so even this is wrong. So D option would be the right answer to this. तो कितने लोगों ने attempt नहीं किया है, please let me know in the chat box. All right, which of the following is privacy threats to e-commerce? तो e-commerce में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपके साथ? आपके साथ फिशिंग हो सकता है जब आपकी इंफॉर्मेशन कोई चोरी कर ले, आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है जो आपका लॉगिन आईडी कोई चोरी कर ले, आपका पासवर्ड चोरी कर ले, एंड पासवर्ड थेफ्ट। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर टू दिस। नेक्स्ट अप, बाय मिस्टेक राज हैज जम्बल्ड अप a few tags and their attributes. Help him by choosing correct option for tags and their corresponding attributes. तो फॉन्ट में कौन सा आप लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं? फॉन्ट फेस होता है, बॉडी का टेक्स्ट होता है, IMG का SRC होता है, तो विच वन इज राइट? सो दिस A option is the right one for this. Next up, the dash tag represents the root of an HTML document. Root मतलब the first tag जो हम लोग यूज करते हैं, और the main tag, it is the HTML tag, जो सबसे पहले आता है आपका HTML tag. All right. Next up, the people who are confused in question number 33 will go back to it, but till now, let's just see 37th. R in IPR stands for
IPR का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब बी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। नाउ 38th क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, ज्यादा इजी क्वेश्चंस तो होते हैं बट थोड़े लंबे होते हैं हमेशा। रोमल, अ केमिकल एनालिस्ट इज डिजाइनिंग अ वेब पेज ऑफ द कंपनी which may contain chemical formula of water. So this is the most important part. You directly see यहाँ पर 2 नीचे आ रहा है, तो what tag will you use? SUB tag for subscript. 39th question, a web page can be accessed by a, जब आपको web page access करना होता है, when you want to access .html files, आप क्या use करते हो? Text editor is for creating, spreadsheet is for Excel, your data application, Office also not. Web browser would be the right answer to this. Next up, the dash tag is an empty tag and it does not require closing tag. तो closing tag कहाँ पर यूज नहीं होता है, हम लोगों ने सिर्फ 2 ही टैग ऐसे पढ़े हैं, एक HR और एक BR. So this is the right option. Next up, case study. All right, case 2 में confusion था. How many of you guys got full marks till now? जिसके सारे के सारे questions right है. ऑल राइट, नेक्स्ट आप केस स्टडी। तो केस स्टडी में कभी कभी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नो एटिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नेटिजन है, फिर कॉपीराइटेड मटेरियल्स। ऑल राइट, तो आइडेंटिफाई द इंटरनेट एटिकेट विच एवरी नेटिजन शुड फॉलो, ये आपके साइबर एथिक्स टॉपिक्स है। वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ओके करेक्ट। वन शुड बी एथिकल, मतलब यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वन शुड बी रिस्पेक्टफुल। ऑल राइट, सो ये दोनों ऑप्शंस थोड़े ऑब्वियस थे, तो अगर ये दोनों राइट है तो इवेंचुअली कंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव इज राइट, है ना। तो बीइंग एथिकल इन साइबर वर्ल्ड मींस वी शुड शेयर इंफॉर्मेशन इन द साइबर वर्ल्ड, नो। We should not use copyrighted materials without the permission of the creator or owner. All right, so this is the right thing. We should further forward the information. All right, so हम लोग को बाकी दो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि all of the above is automatically wrong. So this is the right one, B. Next up, being respectful in the cyber world means we should respect different opinions of others. Okay, that is right. We should use respectful language. All right. We should respect others' privacy. So all of the above would be the right answer to this. I think this ये वाला जो पैराग्राफ था काफी इजी था, बिकॉज साइबर एथिक्स में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। अ नेटिजन विल बी कंसिडर्ड वेरी इररेस्पॉन्सिबल इन नेचर इफ ही और शी फीड द ट्रोल। मतलब जो लोग ट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा पहले कोई किसी की फोटो पे कमेंट कर रहा है, ट्रोलिंग कर रहा है, तो फीडिंग द ट्रोल मतलब ट्रोलिंग को बढ़ावा देना, तो दैट इज इररेस्पॉन्सिबल। सो राइट, दिस सीम्स लाइक द राइट वन। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, so feeding the troll would be the right answer to this. How many of you guys attempted this? Please put a thumbs up in the chat box. And please, the people who are finding this session to be useful, or maybe who think the question paper was easy because you attended my sessions, please do not forget to push the like button so that by the end of the day maybe people get to see ki kya kya answer keys the, because I think this is the first answer key being released on YouTube. So person who spends more time in cyber world may be termed as, आपके जो पैराग्राफ में ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड लाइन में लिखा हुआ था, नेटिजन। सी सिटीजन इज नथिंग, डी सिटीजन इज नथिंग, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो 45th का ए आंसर था। नेक्स्ट अप, केस स्टडी 2। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज फाउंड दिस केस स्टडी टू बी डिफिकल्ट? प्लीज पुट thumbs up, and the people who did not found this difficult, please do not forget to like the video. All right, so क्या हो रहा है यहाँ पर? कोडिंग क्लब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म है, एंड आपके सब्जेक्ट में भी फॉर्म्स ही था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज एन HTML डैश इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। आपके सिलेबस में ना टेबल था, ना बॉक्स था, ना फ्रेम था। नाउ दैट इज यूजिंग द कॉमन सेंस, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फॉर्म आपको पता है, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ये टेक्स्ट ये बॉक्सेस हैं। ओके, द HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स नेम। एलिमेंट मतलब हम लोग टैग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Except is not a tag, even name is not a tag, box is not a tag. Input tag is the most valid one. हम लोग हमेशा लिखते हैं input, उसके बाद type of the box which you need. So question number 48. All right, इतना जल्दी हम लोगों ने कर लिया। I think the question paper was actually easy. Correct attribute value pair to create the box to accept the candidate's name. Now the confusion might be in the language of the question, but
हम लोग को कौन से काइंड ऑफ टाइप यूज करेंगे, एट्रीब्यूट हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो टाइप एट्रीब्यूट यूज होगा, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट निग्लेक्ट। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। एंड उसके बाद हम लोग ये तो निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेम इज नॉट अ वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू यहाँ पर नेम नहीं है, या तो टेक्स्ट हो सकता है, या तो पासवर्ड हो सकता है, या तो चेक बॉक्स होता है, या तो रेडियो होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अप, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो वंस, बिकॉज सिंस यू आर द फर्स्ट पीपल टू लुक एट this answer key, I wish rest of the guys in the country who just gave the exam are able to see their answers, match their answers and get the correct score for them, so that term 2 में आप prepare कर पाओ अच्छे से। choose the correct HTML control, मतलब कोड होता है उसका, to create the text box having the label as preferred user ID। so this हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज क्या है, this is not ID box, not ID field, password field नहीं हो सकता, so text field is the right answer to this। Now last question, HTML element to create the box to accept the secret password, हम लोग क्या यूज करते हैं, the correct HTML element। I think this is again a repeated question, आपका जो 47th क्वेश्चन था शायद उसमें भी यही पूछा था। input tag would be the right answer। all right, so I hope everyone was able to score good marks in this। please do not forget to like the video once, जितने लोगों को भी ये यूजफुल लगा सेशन। and also now for term 2, term 2 is kind of different from term 1 because वहां पर आपके subjective kind of questions आने वाला है, it's not MCQ जहां पर आप directly बहुत practice करके ही कर सकते हो, you'll have to understand the concepts। for that I just need you to do one thing। now don't worry, I'm not asking you to pay money, I'm just asking you to download the Unacademy app। all right, once you find out the sessions which are going on there are useful, I'll explain how to go on about term 2। अब term 2 में क्या कर सकते हो, term 2 के लिए what you guys can do is look at all these features which you get। now YouTube पे पढ़ना, I know it's easy and it's kind of free, but the thing is वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं होती आपकी, there are not a lot of educators which you find, आपको notes नहीं मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपके मेंटी क्विजेस होते हैं but they are not that useful as such। practice tests are kind of the forte of Unacademy, जहाँ पर आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप टर्म 1 के लिए, आई थिंक अभी तो टर्म 1 के लिए थोड़ा लेट हो गया, बट टर्म 2 के लिए आप डेफिनेटली ये सब चीजें यूज कर सकते हो। नाउ दैट वाज अबाउट वन टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपने देखा होगा आईफोन भी 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल आईफोन एंड एक प्रो आईफोन। तो अनअकैडमी आइकॉनिक इज द प्रो वर्जन, जहां पर आपको प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, लाइक जो अब आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग होती है वहां पर। कभी भी आपको दिन में, रात में, कभी भी आफ्टर योर एग्जाम आपको डाउट आए, यू कैन जस्ट गो टू योर अनअकैडमी ऐप, यू कैन फाइंड आउट अ पर्सनल मेंटर जो आपको गाइडेंस देगा। आपको स्टडी प्लानर दिया जाता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग नाउ दिस इज क्वाइट कॉस्टली। नो, इट इज नॉट कॉस्टली। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, you will get it for almost 1100 rupees, 1125, but for that you'll have to use my code. Now every educator, every teacher on Unacademy has a personalized code. My code happens to be ask01। now ये जो code है, this gives you a 10% off discount। that is one फायदा of yours। and इसका दूसरा फायदा क्या है कि I will be able to create more courses for you guys of computer science, of artificial intelligence and information technology। all right, now you might be thinking कि इसके अलावा क्या, what आफ्टर द फीचर्स के अलावा आपको बैचेस आते हैं, लाइक प्रोडिजी बैच जो आपका स्टार्ट करता है हर चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच, आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। लिंग्विस्टिक बैच, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, इंग्लिश, जिन लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होती है लैंग्वेजेस में। ओके, सो इफ आई हैव टॉट समथिंग विच इज रॉन्ग, या फिर यू थिंक मैंने कुछ गलत पढ़ा है, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट टू अनअकैडमी यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, and also we'll be starting our term 2 preparations soon enough from tomorrow onwards। I know आपको पढ़ने का भी मूड नहीं है, आपके थोड़े एग्जाम्स है। we'll be just covering the syllabus during this week and next week onwards हम लोग IT, AI and computer applications का revision और maybe studies चालू करेंगे। alright, so people who are in the class 9th right now, every Sunday there is a free test। अगर आपको scholarship चाहिए, if you want subscriptions, you want to study in a better manner, please 11 AM every Sunday for class 9th, it's a free test। just use the code ASK01, you can enroll for these tests। उसको हम लोग बोलते हैं Unacademy Combat बोला जाता है उसको। all right, after this session I'll go back to 33rd question and check it कि क्या सीन है वहां पर। आइकॉनिक का प्राइसिंग, now again
आइकॉनिक में प्लीज रिमेंबर आपको क्या एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, आपको कोडिंग भी सीखने मिलती है वहां पर। आपको एक यंग कोडर्स करके वहां पर एक सेक्शन है वेर यू कैन लर्न पाइथन, यू कैन लर्न जावा, यू कैन ऑल्सो लर्न HTML, राइट। तो उसके लिए अगर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 2000 रुपीज पर मंथ। प्लीज रिमेंबर देयर आर एक्स्ट्रा फीचर्स, इट्स द प्रो वर्जन। ऑल्सो जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे ही आपका जो प्राइसिंग है बहुत कम होता रहता है, राइट। अगर आप 2 साल का ले रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 रुपीज। ओके, सो नेक्स्ट अप इस फ्री स्पेशल क्लासेस। फ्री स्पेशल क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द 33rd क्वेश्चन। लेट मी जस्ट चेक कि कौन सा था वो 33rd क्वेश्चन जहां पर लोगों को कंफ्यूजन है। ऑल राइट, FOSS is more user friendly as compared to the proprietary software. Now let's see, एक सॉफ्टवेयर है फ्री, ठीक है, हम लोग FOSS की बात कर रहे हैं, और एक है प्रोप्राइटरी, ठीक है, एंड दिस वन इज पेड। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। दीज पेड सॉफ्टवेयर्स आर मोर यूजर फ्रेंडली क्योंकि आप इसके लिए पे कर रहे हो, यू आर पेइंग फॉर अ सर्विस। यूजर फ्रेंडली मतलब आपको ज्यादा बग्स नहीं आएंगे उसमें, आपका जो चीजें हैं बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, दैट्स व्हाई इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। बट जो OSS है, एक कोई कंपनी उसको ओन नहीं करती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली उसका जो यूजर फ्रेंडली नेचर है वो कम होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। And proprietary software allows developers across the globe to participate in ongoing development of software. This is not true. This is only true for OSS. I know there are kind of developer tools, but वो अलग चीजें होती है, you have to enroll for that, and generally वो सबके पास नहीं होता है. So both statements are wrong. But let's wait. If there's a confusion, we can wait for the answer key from CBSE. All right. So this was it for this session. Please do not forget to like the video. हम लोग नेक्स्ट वीक से जल्दी से आपकी प्रिपरेशन चालू करेंगे, एंड टिल देन जस्ट यू कैन प्रैक्टिस मोर। आपके टर्म 1 अच्छे गए, फोकस फॉर टर्म 2 एंड जस्ट कीप ट्रैकिंग।